Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to today's lecture. Today's lecture is about adrenergic agonist. Previous lecture में हमने already cholinergic agonist और cholinergic antagonist को describe किए थे कि what is cholinergic agonist, what are the drugs acting and what are the mechanism involved there. और इसी तरह cholinergic antagonist को भी. आज का लेक्चर जो है तो वो adrenergic agonist का है. Adrenergic agonists are also called as sympathomimetics. Why sympathomimetic? Because adrenergic agonists are basically the drugs that produce an effect similar to that obtained by stimulation of sympathetic nerve system. मतलब ये हुआ कि adrenergic agonist हमारे पास इसमें ऐसे ड्रग्स होंगे जो sympathetic nerve system की एक्टिविटी को एनहांस करेंगे. Now sympathetic actions, what are those sympathetic actions that have to be activated and enhancing by adrenergic agonist? So sympathetic actions are basically mydriasis, that is dilatation of eye pupil, increased heart rate, bronchodilation, inhibit peristalsis of gastrointestinal tract and secretion, relaxation of GIT muscles, that is also known as constipation, relaxation of urinary bladder, relaxation of uterus, delay premature labor, and increased conversion of glycogen to glucose means hyperglycemia. Hyperglycemia because जब हमारे पास ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, तो that is known as hyperglycemia. Now adrenoceptor or adrenergic receptors mean those receptors which are activated by the adrenergic agonist. So there are basically four types of adrenoceptors: alpha 1, alpha 2, beta 1 and beta 2. The alpha 1 mediated actions are vasoconstriction, increased peripheral resistance, increased blood pressure, mydriasis and increased closure of internal sphincter of the bladder. जब अल्फा 1 रिसेप्टर हमारे पास इन ड्रग्स की वजह से एक्टिवेट होते हैं तो ये so these effects are done. And the same sense that is alpha 2, the alpha 2 mediated activities are inhibition of norepinephrine release, inhibition of acetylcholine release and inhibition of insulin release. Beta 1 mediated activities are tachycardia, increased lipolysis, increased myocardial contractility and increased release of renin. Renin is basically an enzyme that is found in RAS system. Renin, angiotensin, renin, aldosterone and angiotensin converting enzyme system that is responsible for the regulation of blood pressure. The beta 2 mediated activities are vasodilation, decreased peripheral resistance, bronchodilation, increased muscle and liver glycogenolysis, increased release of glucagon and relaxed uterine smooth muscle. Now classification of adrenergic agonist. So adrenergic agonists are classified on the basis of chemistry and mode of action. On the basis of chemistry, they are classified into catecholamines and non-catecholamines. Catecholamines are rapidly acting and have short half-life due to the rapid degradation by monoamino oxidase and catechol or methyl transferase. These are basically enzymes that are responsible for the degradation and metabolism of catecholamines. Catecholamines have catechol rings and they are water soluble and does not affect you orally and have poor penetration to the central nervous system. Central nervous system को कैटकोलामीन एक्सेस नहीं करता क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है और सीएनएस को पेनिट्रेशन के लिए ज़रूरी होता है कि वो लिपिड सॉल्युबल होंगे. Non-catecholamines
So they may have delayed actions and have long half-life because they resist degradation by amino oxidase and catechol or methyl transferase in the gastrointestinal tract. They lack catecholine. इसमें catecholine नहीं होगा. What is catecholine? Catecholine are basically benzene consist of two hydroxyl groups. So they are lipid soluble and thus effective orally and cross the central nervous system and thus have prominent and pronounced effect on central nervous system also. So they are orally administered. Example of non-catecholamines include ephedrine, amphetamine, phenylephrine, methoxamine, salbutamol, and retodurine. Now, classification on the basis of mode of action. So there are basically three classes of adrenergic agonist on the basis of action: direct, indirect, and dual action. Direct. So डायरेक्ट एक्शन हमारे पास ऐसा होता है कि जब एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट रिसेप्टर को बाइंड करके डायरेक्टली जब बाइंड होते हैं तो ये एक्टिविटी यानी सिंपैथेटिक एक्टिविटी की एक्टिविटी को एनहांस करते हैं. सो दैट इज बेसिकली अ डायरेक्ट इफेक्ट एंड एग्जांपल्स इंक्लूड एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन, डोपामिन, आइसोप्रेनालिन, फिनाइलेफ्रिन, क्लोनिडीन, डोबुटामिन, सल्ब्यूटामोल, मेथोक्सामिन एंड नाफाजोलिन. Indirect adrenergic agonist. So indirect, they may also act indirectly by stimulating the adrenergic receptor by the following two ways. सबसे पहले ये क्या करता है कि ये नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज को इंक्रीज करता है हमारे पास एड्रेनर्जिक न्यूरॉन में. असल में हम ऐसा होता है कि न्यूरोट्रांसमिशन जब होती है तो उसमें एड्रेनर्जिक न्यूरॉन से साइनाप्स तक को नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होती है. उस नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज ट्रांसमिशन को ये एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट क्या करता है, वो नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज को एनहांस करते हैं. तो हमारे पास फिर जब ये ज़्यादा कंसंट्रेशन में होंगे तो फिर ये इफेक्ट भी ज़्यादा देंगे. सो दैट इज़ वाई that is an indirect action. Example include amphetamine. And the second mechanism is inhibition of uptake of norepinephrine, mean its availability in synapse. इस तरह होता है कि साइनाप्स में जब नॉरएपिनेफ्रिन आ जाता है तो इसके बाद ये उनकी अपटेक होती है, या इसकी मेटाबॉलिज्म होगी या इसकी न्यूरॉन को अपटेक होगी. तो वो अपटेक को अगर हम इनहिबिट करें तो मीन इसकी कंसंट्रेशन भी साइनाप्स में बढ़ेगी. सो मीन एन इनडायरेक्ट एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट एक्शन हमारे पास फिर आएंगे. एन एग्जाम्पल इंक्लूड कोकेन एंड एंटी डिप्रेसेंट. एंड द थर्ड क्लास इज डुअल आर मिक्स्ड. So the mixed adrenergic agonists include ephedrine and pseudoephedrine. Mean they direct and indirect stimulation of adrenergic receptors. Direct mechanism भी involve होंगे और indirect भी होंगे. Now the third class of adrenergic agonists are on the base of spectrum of action. It is non-selective and selective. Mean के इन ड्रग्स की रिसेप्टर कितनी एक्सटेंट रिसेप्टर को ये मीडिएट करते हैं. सो द फर्स्ट वन इज नॉन सेलेक्टिव. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट नॉरएपिनेफ्रिन, सो द नॉरएपिनेफ्रिन एक्ट ऑन अल्फा 1, अल्फा 2 एंड बीटा 1. मतलब इसका ये हुआ कि नॉरएपिनेफ्रिन प्योरली एक रिसेप्टर पर काम नहीं करेगा, बल्कि बहुत सारे रिसेप्टर पर ये काम करेंगे. This phenomena is basically called multiplicity of action. And in the same sense, the epinephrine acts on alpha 1, alpha 2, beta 1, beta 2, and beta 3, and so on. And selective adrenergic agonists purely act on one receptor. There will be no multiplicity action phenomena there. If we are talking about the alpha 1 receptor, so that the alpha 1 purely act on alpha 1. Drugs are basically purely act on alpha 1 receptor. For example, phenylephrine. And if we are talking about alpha 2 selective adrenergic agonists, so they act on only alpha 2 receptor.
For example, clonidine, and so on. Now, direct acting adrenergic agonist drugs. So, first one, adrenaline. So, if we are talking about the receptor action, so adrenaline are basically non-selective, mean that have an alpha 1, alpha 2, beta 1 and beta 2 and beta 3 effect, but dose dependent. If we are dealing with high dose, so the action will be alpha 1 and alpha 2, and at low dose the action will be on beta 1, beta 2 and beta 3. Adrenaline are basically natural catecholamine and has fast onset and short duration of actions. एडमिनिस्ट्रेशन, एड्रेनलिन को हम इंट्रावस्कुलर भी दे सकते हैं, सबक्यूटेनियस भी दे सकते हैं, इनहेलेशन भी दे सकते हैं और टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन भी इसकी पॉसिबल है, लेकिन ओरली ये इफेक्टिव नहीं है बिकॉज दीज आर catecholamine and we have discussed earlier that it can be metabolized and degraded by catechol-methyl-transferase COMT and monoamino oxidase. Now, actions mean organ effect of adrenaline. So, adrenaline have many actions on organs. First one is basically cardiovascular system. Adrenaline have ionotropic, chronotropic and dromotropic effect on heart. Ionotropic is basically the increase in heart rate. Dromotropic effects are basically the increase in electrical conduction of heart, and the chronotropic effect is basically the increase in force on heart. So all these actions are adrenaline mediated actions. On blood pressure, adrenaline enhances the systolic blood pressure. एड्रेनलिन बेसिकली हमारे पास जो है ना हार्ट पर इनकी एक्टिविटी हार्ट रेट को बढ़ाना है, तो इसी वजह से ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, बट डोज डिपेंडेंट. अगर हम लो डोज की बात करते हैं तो बीटा 2 स्टिमुलेट होगा, तो फिर हाइपोटेंशन. अगर हम हाई डोज की बात करते हैं तो ये अल्फा 1 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है, तो हार्ट रेट इंक्रीज होगा, तो ये हाइपरटेंशन में इसकी यूज हो सकती है. अगर हम वस्कुलर स्मूथ मसल सेल्स की बात करें तो वस्कुलर स्मूथ मसल सेल हमारे पास जो स्किन में होते हैं, तो एड्रेनलिन क्या करता है, ये स्किन मसल को कंस्ट्रक्ट करता है, और अगर स्केलेटल मसल है तो वो उसको डायलेट करते हैं. अब नॉन वस्कुलर स्मूथ मसल सेल हमारे पास कुछ एरियाज और कुछ लोकेशन बॉडी में उसमें नॉन वस्कुलर स्मूथ मसल सेल्स प्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल, इन लंग्स देयर विल बी ब्रोंकोडाइलेशन, in gastrointestinal tract there will be decreased motility, and on bladder there will be decreasing the detrusal smooth muscles found in the wall of bladder, contract trigone and sphincter. And in pregnant uterus there will be trocholytic actions. Trocholytic actions are basically anti-contraction, मीन यूटराइन कंट्रक्शन को ये डिक्रीज करेंगे, तो इसकी यूज हमारे पास प्रीमेच्योर लेबर और मिसकरेज में इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि प्रेगनेंसी ताकि बर्थ जो है ना वो ना हो. आई पर इसका इफेक्ट जो है तो वो मिडरियासिस है, मीन डायलेशन ऑफ प्यूपिल. द अदर इफेक्ट्स ऑफ एड्रेनलिन आर डिक्रीज द मेटाबॉलिज्म ऑफ इंसुलिन एंड इंक्रीज ग्लूकागॉन रिलीज और secretion. सॉरी, मेटाबॉलिज्म नहीं, मीन इंसुलिन रिलीज को कम कर देता है और ग्लूकागॉन रिलीज को इंक्रीज करता है. इंक्रीज लेवर ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड इंक्रीज एडिपोज लाइफोलाइसिस. एंड on CNS the effects are not very prominent and little, include headache, tremors and restlessness. Now, indication of adrenaline. Indication of adrenaline may be
locally and systemically. Locally हमारे पास एड्रेनलिन ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है. सो इसका हीमोस्टेटिक इफेक्ट हमारे पास डेंटल में भी यूज हो सकती है. डेंटल में यूज इस तरह है, हम लोकल एनेस्थेटिक के साथ एपिनेफ्रिन को मिलाते हैं. और क्यों मिलाते हैं? मिलाते इसलिए है कि ताकि हमारे पास इंसेशन की एरिया में जहां हम कट लगाते हैं, जहां हम सर्जरी करते हैं, वहां पर जब ब्लड फ्लो होगा तो वो ज़्यादा नहीं होगा. सिस्टेमिकली हम अस्थमा में भी एड्रेनलिन को इस्तेमाल कर सकते हैं. इट इज गिवन बाय सबक्यूटेनियसली और बाय इनहेलेशन एंड इमरजेंसी टू प्रोड्यूस ब्रांकोडाइलेशन which are basically beta 2 mediated actions, and the other are reduction in mucosal edema. Edema are basically the fluid accumulations. So if there is accumulation in the vessels, so adrenaline can be given, and hence the vessels are vasoconstricted and there will be a reduction of mucosal edema. लेकिन अगर हम सेलेक्टिव बीटा 2 देंगे तो ये अच्छा होगा. सिस्टेमिकली the other use of adrenaline are in anaphylactic shocks, that are basically anaphylactic shocks are hypersensitivity reactions and histamine mediated actions. When we given subcutaneously adrenaline and anaphylactic shock, so histamine release will be declined and the anaphylactic shock mean hypersensitivity reaction will be lower. Systemically, adrenaline are also given in cardiac arrest to restore cardiac rhythm in patient with cardiac arrest. Adverse drug effects. Adrenaline have also a variety of adverse effects which include tachycardia, palpitation, arrhythmias, angina, faints, headache, weakness, tremors, anxiety and restlessness, and hypertension. Hypertension will further lead to cerebral hemorrhage and pulmonary edema, and there will be coolness of extremities, tissue necrosis, and gangrene extravasation, and nasal stuffiness and rebound congestion. If used as decongestant, अगर हम एड्रेनलिन को एज ए डिकंजेस्टेंट मीन अस्थमा में इस्तेमाल करते हैं, सो रिबाउंड कंजेक्शन भी एक मसला क्रिएट हो सकता है. Contraindications. Adrenaline may have also some contraindication, mean that it cannot be used in that conditions. If you have congestive heart disease, hypertension, peripheral arterial disease, and hyperthyroidism. हाइपरथायराइडिज्म में असल में हमारे पास जो है ना वो ऑलरेडी कार्डियोवास्कुलर एब्नॉर्मलिटीज होती है. मीन थायरॉक्सिन जब ज़्यादा रिलीज होता है तो कार्डियोवास्कुलर एब्नॉर्मलिटीज ये भी काज करता है. अगर हम एड्रेनलिन लेते हैं तो वो तो ऑलरेडी कार्डियोवास्कुलर एब्नॉर्मलिटी काज करता है, तो मीन देयर विल बी एन एनहांसमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एब्नॉर्मलिटी एंड एंजाइना एंड अरिथमिया एंड माइकार्डियल infarction. So in these conditions adrenaline will not be given. And if you have a close angle glaucoma, so the adrenaline will not be given because there is a risk of intraocular pressure enhancement increase, and there is a possibility of optic damage. So it's all about today's lectures. Thank you very much. Allah Hafiz.